Hello, viewers. Planning to write IPMAT paper this year, coming this session? Well, I'm sure most of you have practiced a lot from a lot of sources that you already have. So we thought, why not make you practice something from Arun Sharma? So let's just start the session. I'm your mentor and your guide, Brinda. And in this session, we will take a look at some good questions from Hello, Shreyansh and Abhishek and the Learning Hub. Let's just start the session. So we'll take a look at some questions from Arun Sharma for IPM Verbal Ability section. So let's just understand why is it important to practice from various sources such as Arun Sharma. See, you get to see how good your preparation is, you get to see where you stand, and you get to learn a lot when you practice from good sources. So, hello, Mehul and Sambhavna and Ajay. I guess let's just start now. Well, today in this session, we will take a look at two topics. That is, one, we'll take a look at some reading comprehension passage-based questions because they are, as you already know, super important because they may make any change in the pattern of the paper. But one section that will always be there is the section based on reading comprehension passages. So I always believe and I always advocate that students, you should have a good command on the questions based on reading comprehension passages. So, hey Manjot, good evening. सो कुछ चीजें तो स्टैंडर्ड हैं अपनी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको डील कैसे करना है उसके लिए जो कुछ बेसिक्स हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि आंसर्स कैसे निकल के आएंगे हमारे वो बेसिक्स को हम क्लियर करेंगे वो डिस्कस करेंगे एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम अरुण शर्मा करेंगे टू सी वेयर वी स्टैंड बट देन बिफोर आई शेयर द क्वेश्चंस विद यू लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बिफोर यू मार्क योर आंसर्स व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आएंगे तो ये एक ऐसा सेक्शन होना चाहिए जिसको अगर आप स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आप हमेशा एडवांटेज में रहोगे बिकॉज जितना यहाँ पर आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हो क्योंकि सब कुछ सामने है सिर्फ आपकी सर्चिंग एबिलिटीज है आपकी लॉजिकल एबिलिटी है आपकी कॉम्प्रिहेंशन है आंसर ढूंढने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा सा एंड यू विल गेट द आंसर्स सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड आपने एक पैसेज को पढ़ा और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है आपके सामने लेट्स से एक पैसेज है उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है उस पे बेस्ड चार मल्टीपल आंसर चॉइसेस हैं तो कैसे हमें सही आंसर मिलेगा क्योंकि चॉइसेस क्लोज होते हैं बहुत आसान तो वो करके नहीं देंगे आपको कुछ भी तो गलत चॉइस को आप कैसे एलिमिनेट करोगे और राइट चॉइस तक कैसे पहुंचोगे वो कुछ स्ट्रैटेजीज पहले हम डिस्कस करेंगे फिर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे साथ में आप मुझे हेल्प करोगे आंसर्स को फाइनलाइज करने के लिए ओके सो लेट्स जस्ट से सो पैसेज पढ़ लिया हमने अब चार चॉइसेस मेरे सामने हैं मुझे ढूंढना है कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है तो कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर मैं अपने दिमाग में रखूं इफ आई थिंक अबाउट दीज थिंग्स इफ आई हैव दी स्ट्रांगली से embedded in me I would be able to get the answers right number one if something is stated in the passage and something otherwise is written in the option so it could be a new information that was not there in the passage it could be something that the writer has not mentioned at all, or it could be something that is opposite to what the writer has written in the passage. These three things will never be the answer. Let's understand. So, if the writer says this is good, the answer, one of the choices says this is better. The writer only said it is good. He did not compare it with anything. He just said it is good. The option says this is better. This will not be the answer the option could say this is not good it is a distortion this will not be the answer if the writer has written okay this is good and this option says this is say he includes some alien information some new information in the answer it will not be the answer because when it comes to rcs whatever the rc says the answer has to come from there it cannot come from your knowledge from your assumption of any of the things that have been stated in the passage
The other things to bear in mind, um, hello, boys. Yes, I will take up these questions once I finish the session. So towards the end of the session, I will answer all these questions. All right, put them on hold. If there is anything specific related to the topic, please feel free to ask. All right. Now, the other things that may not be a part of the answer could be, let's say, if there is an extreme term. So, for example, what terms could be extreme? So always, ever, never, superlative. So the writer simply said it is good. The option says it is the best. It's an extreme term. The writer says we go there. The option says we always go there. It's an extreme term. Okay, the writer said we go there. This says we never go there. And again, an extreme term. So whenever you see extreme words in the options, um, read that line of the passage a little more carefully, and you will realize that that is not what the writer had stated explicitly or implicitly. So you will have a good enough reason to rule that option out. The other options that will never be the answer will be umbrella terms. So if at all there is an option that fits the given answer, but then it's an umbrella term, it will the same term or the same answer will fit similar situation or a scenario, that option will not be the answer. And last but not the least, let's say the writer has given some example to state his point. The writer stated something, then he exemplified it, he substantiated it with an example. Now, that example has been given as one of the options. So, that generally will not be the answer depending on the question type. So, if the question simply ask you the say what did the writer mean, the example will not be the answer here, especially if they ask you the main idea of the passage, they ask you to summarize it, the example will not be the answer. So I guess these are good enough things for us to know. Let's delve deep and let's see what we've understood. So you will help me with the questions, so I hope the questions are visible, you are able to read them. I'm giving you a moment to read, then I'll discuss this with you. You will tell me what the right answer is. Of course, I'll tell you what the right answer is, and I'll give you a proper reason for that as well. So let's get started. A moment for you to read, and then we'll discuss the answers. Or what I'll do for you is I'll read it for you so that you have a better understanding of what's stated here. So this says you seemed at first to take no notice of your school fellows. So let's just mark this together. What does it say? So this says you seem to take no notice of your school fellows. Rather, you set yourself against them because they were strangers to you. So what does the first line mean? See, the writer will state very important facts here in the first line of the passage. तो पहले आप अपने school fellows को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो और because वो आपके लिए strangers होते हैं. Fair enough, happens. Now, they knew a little of you as you did of them. So he's talking about both the sides now. वो भी आपको कम जानते हैं, आप भी उनको कम समझते हो. This would have been the reason for their keeping aloof from you as well, which you would have felt as a hardship. Learn never to conceive a prejudice against others because you know nothing of them. It is bad reasoning. So वो कहते हैं कि वो आपसे दूर रहते हैं, आप उनसे दूर रहते हो, लेकिन हमें prejudice नहीं रखने चाहिए किसी के लिए क्योंकि ये गलत reasoning होती है. That's what the writer says. So he's suggestive here. वो आपको advise कर रहा है and makes enemies of half the world. Do not think ill of them till they behave ill to you. तब तक खराब behave नहीं सोचो उनके बारे में जब तक वो आपके साथ खराब behave नहीं करते. And strive to avoid the faults which you see in them. This will disarm the hostility sooner than pique or resentment or complaint. Now, pique could be a new term for some of you. Pique होता है annoyance. सो ये सब अगर आप ऐसा बिहेव करोगे उनके साथ इल बिहेव नहीं करोगे जब तक वो आपके साथ बुरा बिहेव नहीं करते तो क्या होगा यू विल एंड अवॉइड टू लुक फॉर फॉल्ट्स इन देम उससे क्या होगा हॉस्टिलिटी कम हो जाएगी annoyance कम हो जाएगी resentment or complaint कम हो जाएगा and probably you will become friends. So that's what the passage is all about. Now let's take a look at the options. So this says the discomfort you felt with your school fellows was because both sides knew little of each other. So let's see, discomfort you felt with your school fellows. ठीक है, हमने school fellows की ही बात करी थी. We are being very generic here because both sides knew little of each other. यहाँ तक ठीक है. Okay, Shreyansh, I've seen your answer. Let's see what the others have to say. You should not complain unless you find others prejudiced against you. So you should not complain unless you find others prejudiced against you and have attempted to carefully analyze the faults you have observed in them. Now see, there is a catch here. उसने क्या कहा था? Strive to avoid the faults you see in them.
हम कह रहे हैं, यहाँ ऑप्शन कह रहा है केयरफुली एनालाइज द फॉल्ट्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन देम। डिस्टॉर्शन है, राइटर ने तो बोला था अवॉइड कर दो फॉल्ट्स, हम यहाँ पे कह रहे हैं एनालाइज कर लो केयरफुली फॉल्ट्स, हो गया डिस्टॉर्शन। सी दिस इज व्हाट डिस्टॉर्शन इज, राइटर ने जो बोला, जो ऑप्शन बोल रहा है, दे आर नॉट इन सिंक। यहीं पर इस ऑप्शन को हम रूल आउट कर सकते हैं। The discomfort you felt with your school fellows was because both sides knew little of each other. भाई दोनों को discomfort हुआ था, आपको भी हुआ था, सामने वाले को भी हुआ था. Avoid prejudice and negative thoughts till you encounter bad behavior from others. I believe यही राइटर ने भी बोला था कि prejudice नहीं होना चाहिए, mental block नहीं होना चाहिए, and encounter, I mean, और negative thoughts को avoid करो जब तक कोई बुरा behave नहीं करता आपके साथ. That's exactly what the writer had said. And then win them over by shunning the faults you have observed. भाई strive to avoid the faults you see in them. शन कर दो faults जो आपने देखे भी थे, उनको छोड़ दो, उनको मत देखो, and win them over. Friends बन जाओ. So probably this is close. Let's put this one on hold. Now, the other important thing to probably bear in mind when you're marking the answers, let's say मुझे लग रहा है सेकंड तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो लग रहा है यही आंसर है, लेकिन यहाँ पर हमें जल्दी नहीं करने चाहिए. You should evaluate all the options before you mark your answer. You encountered hardship amongst your school fellows because you did not know them well. तो हम यहाँ पे सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, जबकि राइटर ने तो उनकी भी बात करी थी, दूसरे स्टूडेंट्स की, तो कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है यहाँ पे. इनकम्प्लीट आंसर्स, डू यू थिंक दे कैन बी द राइट आंसर्स? Well, let's see. You did not know them well. You should learn not to make enemies because of your prejudice, irrespective of their behavior towards you. अब यहाँ पर भी एक दूसरी कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन है कि वो आपके साथ कैसा भी बिहेव कर ले, आपको प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए. भाई उसने क्लियरली बोला था कि जब तक वो बुरा बिहेव नहीं करते तब तक उनके बारे में गलत मत सोचो, राइट? तो कॉन्ट्रडिक्शन है, आई गेस कैनॉट बी द राइट आंसर. द नेक्स्ट वन. You encountered hardship among your school fellows because you did not know them well. You should learn not to make enemies because of your prejudice unless they behave badly with you. Now, some of you might think that this could be a good answer choice, but let's see. यहाँ पर हम अभी भी सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, जबकि राइटर ने आपकी और सामने वाली की भी बात करी थी. इनकम्प्लीट है, सो आई गेस यस, सम ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी. नाउ लेट्स सी, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन. Try before you buy. Now see, look at the tone of the writer. क्या कर रहा है राइटर हमारे साथ? वो आपको या तो सलाह दे रहा है या वो आपको कमांड कर रहा है. Try before you buy. Now let's see what does the writer have to say after that. We use this memorable saying to urge you to experience the consequence of an alternative before you choose it. Now see, it's a very broad statement. Writer ने क्या बोला? भाई खरीदने से पहले try कर लो. We use this memorable saying to urge you. हम आपको urge कर रहे हैं कि consequence समझ लो, outcome, impact, effect समझ लो किसी चीज का. कुछ भी चूज करने से पहले whenever it is feasible, जब possible हो तब इस चीज को try करो. So the writer says ये हमेशा नहीं होगा. Choice of words matters. If you're considering buying a van after having owned sedans, rent one for a week or borrow a friend's. See, he's asking you to try it and he has given you an example. भाई आपको वैन खरीदनी है और आपने हमेशा सेडान चलाई है, तो अपने फ्रेंड से बोरो कर लो या एक रेंट कर लो. Um, in addition, okay, by experiencing consequences firsthand, they become more meaningful. In addition, you are likely to identify consequences you had not thought of before. Maybe you will discover that it is difficult to park a van in your small parking space, but your elderly dad has much easier time getting in and out of it. Now, see, what has the writer done here? So, first of all, see, you have to understand the tone of the writer. He's just advising you something. खरीदने से पहले ट्राई कर लो जब पॉसिबल हो. फिर उसने एक एग्जाम्पल दे दिया, भाई आपने वैन लेने का सोचा है, आपने हमेशा सिडान चलाई है. सिडान वो थोड़ी बड़ी वाली कार होती है, ऐसी वाली मर्सिडीज टाइप की. तो आपको वैन लेनी है तो किसी से ले लो, बोरो कर लो, रेंट कर लो, रख के देखो तो आपको पता चलेगा कि पार्किंग लॉट में क्या प्रॉब्लम है या आपके डैड को ज्यादा क्या पसंद आता है. सो ही जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल. नाउ लेट्स सी, लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शन. So you need to summarize this. Now let's see what supports it best. So if you're planning to buy a van after being used to sedans, borrow a van or rent it or try it before deciding to buy. You may realize that parking a van is difficult for while it is easier for your elderly father to get in and out of it. Now see, galat to nahi hai, but it's only an example. Do you think example can
should be used to summarize the given information? I hope not. That would be a major mistake. ये एग्जाम्पल को उन्होंने स्क्वीज कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया, और वो गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मुझे इस पैसेज को समराइज करना है तो ये आंसर नहीं हो पाएगा. लेट्स सी. बिफोर चूजिंग एन ऑल्टरनेटिव, एक्सपीरियंस इट्स कॉन्सिक्वेंसेज इफ फीजिबल. भाई, चूज करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेज को, उसके आउटकम को एक्सपीरियंस कर लो अगर पॉसिबल है. यहां तक हम इन सिंक हैं विद व्हाट द राइटर सेड. If, for example, you want to change from sedan to a van, try one before buying it. You will discover aspects you may have never thought of before. Now, see, for example, sedan से van पे जाने के लिए try कर लो खरीदने से पहले. So this is in sync with whatever the writer had said. So it's a good option. But before I mark my answer, I have to evaluate the other options. That's a must. Always try before you buy anything. Now see, always try before you buy anything. राइटर ने क्या बोला था? अगर पॉसिबल है तो कर लो. राइटर ने बड़ी आराम से, बड़ी क्लियरली बोला था, पॉसिबल है तो करो वरना मत करो. ये क्या बोल रहा है? हमेशा ट्राई कर लो. है चेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सट्रीम लैंग्वेज है, ऑलवेज डू समथिंग, जबकि राइटर ने तो नहीं बोला था. You are bound to discover, again a very compulsive tone. ऐसा ही होगा. राइटर ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था. राइटर ने बोला था ये करके देख लो, वो करके देख लो, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो तुम्हें समझ में आएगा. ये राइटर ने बोला था. One of the consequences for going in van is that it is more difficult to park. Okay, वो difficult ही होगा. ओके, उसने तो बोला था ऐसा हो सकता है. सो तीन लाइंस हैं, तीनों में बड़ी कंपल्सिव टोन है. सो इट्स अ गुड इनफ रीजन फॉर अस टू एलिमिनेट दिस आंसर चॉइस. अग्रीड? ओके, लेट्स रूल दिस आउट. We urge you to buy products such as vans before buying them. Then you can experience consequences you have not thought of, such as parking problems. But your father may find vans more comfortable than cars. अब यहाँ पर जो इसकी लास्ट लाइन है, अगेन हम थोड़ा सा प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो गए हैं. एंड इवन अगर आपको डाउट है, ऑन्स ऑफ डाउट है कि बी या डी, लेट्स इवेलुएट बोथ द ऑप्शंस. बी इज कंप्लीटली इन सिंक विद व्हाट द राइटर हैड सेड. यहाँ पर हम कार्स की बात करें जबकि राइटर ने तो सेडान बोला था, एग्जाम्पल में सेडान बोला था, तो भी देर इज वेरियंस इन द गिवन इंफॉर्मेशन एंड दिस इज नॉट एज गुड एज ऑप्शन बी. So we'll always go with the better answer choice, which is option B. And I guess we've finalized the answer. Now let's see. Although almost all climatic scientists agree that the Earth is gradually warming, they have been of two minds about the process of rapid climate shifts within larger periods of change. Hello, G aspirant. Good evening. So let's see. First line, very crucial line. इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लगभग सारे क्लाइमेट साइंटिस्ट अग्री करते हैं कि अर्थ तो ग्रेजुअली वार्म अप हो रही है. एंड दे हैव बीन ऑफ टू माइंड्स. भाई, लेकिन उनको दो माइंड है. दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. दे आर इन डिलेमा about the process of rapid climate shift within the larger period of change. किस चीज के लिए है? ये तो वो मान रहे हैं कि ग्रेजुअली वार्म हो रही है अर्थ, लेकिन डिलेमा कहाँ पर है? जो रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट है विद इन द लार्जर पीरियड ऑफ चेंज, उसके लिए जो जो उसका प्रोसेस है ऑफ रैपिड क्लाइमेट शिफ्ट विद इन द लार्जर पीरियड ऑफ चेंज, उसके लिए दे आर इन टू माइंड्स, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. Some have speculated that process works like a giant oven or a freezer. तो कुछ का स्पेकुलेशन क्या है, कुछ का गेसवर्क क्या है कि प्रोसेस एक जाइंट अवन या फ्रीजर की तरह काम कर रहा है, वार्मिंग और कूलिंग द होल प्लैनेट एट द सेम टाइम. तो भाई ये हमारा अर्थ है, तो वार्म और कोल पूरा उसको वो एक ही साथ हो रहा है. सो इट्स वर्किंग लाइक ईदर अ जायंट oven or a freezer. The others think that shifts occur on opposing schedules, northern and southern hemisphere. दूसरे लोगों का ओपिनियन क्या है? यहाँ बनाते हैं से कि भाई यहाँ पर अलग चेंज है, यहाँ पर अलग इम्पैक्ट है. सी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यही स्पेकुलेशन है. So, like exaggerated seasons, recent research in Germany examining climate pattern in southern hemisphere at the end of the last ice age strengthens the idea that warming and cooling occurs at alternative times in two hemispheres. तो भाई उन्होंने क्या करा, एक रिसर्च कर लिया जर्मनी में, क्लाइमेट पैटर्न को एग्जामिन करा और उन सदर्न हेमिस्फीयर में किया. एंड उन्हें क्या समझ में आया कि द कि जो वार्मिंग और कूलिंग हो रही है वो अल्टरनेटिव टाइम से हो रही है और डिफरेंट हेमिस्फीयर पे हो रही है. तो प्रोबेबली दे आर गोइंग विद दिस थियरी मोर देन द फर्स्ट थियरी. नाउ लेट्स सी.
A more definitive answer to the debate will allow scientists to better predict when and how quickly the next climate shift will happen. अब एक और definitive answer उन्हें चाहिए to this debate, उससे उन्हें पता चल जाएगा कि अगला shift कब और कितनी जल्दी हो जाएगा. So I guess let's see. Scientists have been unsure whether rapid shifts in Earth's climate happen all at the same time or on opposing schedules in different hemisphere. भाई यहाँ तक तो ठीक है, एक साथ होगा ऐसा वाला या अलग अलग अपोजिंग स्केड्यूल्स में डिफरेंट हेमिस्फीयर में होगा ऐसा वाला. ठीक है, ये बात तो हमने पढ़ी थी कि उनको कंफ्यूजन है, दे आर इन टू माइंड्स अबाउट दिस थिंग. रिसर्च विल हेल्प फाइंड अ डेफिनेटिव आंसर. अब देखो यहाँ पर है कैच. रिसर्च विल हेल्प मतलब रिसर्च से पता चलेगा, ये टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस हियर, लेकिन पैसेज में तो था रिसर्च तो हो गई है. देखो यहाँ क्या लिखा है. This says recent research in Germany examining climate pattern at the end of the ice age strengthens the idea. हमारा तो आइडिया यहीं पे स्ट्रेंथन हो गया था. ये कह रहे हैं रिसर्च से पता चलेगा. डेफिनेटिव आंसर हो गया कॉन्ट्रडिक्शन. डिस्टॉर्शन है. डिस्टॉर्शन है तो ये आंसर नहीं है, ये बात पक्की है. सो आई गेस लेट्स रूल दिस ऑप्शन आउट. नाउ लेट्स सी. Scientists have been unsure whether rapid shifts in Earth's climate happen all at once or on opposite schedules in different hemispheres. तो यहाँ तक तो ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी. Finding a definitive answer will help them better predict climate shift in the future. भाई definitive answer अगर मिल जाए तो उन्हें पता चल जाएगा अगला shift future में कब होगा. In sync है, यही तो हमने भी पढ़ा था. Let's put this one on hold. Research in Germany will help scientists find a definitive answer about warming and cooling of Earth, predict climate shifts in the future in a better manner. Research in Germany करना है क्या हमें? पैसेज ने बोला था research in Germany जाके कर लो. भाई research in Germany हो चुकी है. Research in Germany will help. है distortion? Distortion है तो आंसर नहीं है. मोर रिसर्च देन डिबेट. यहीं पर गड़बड़ है. क्या पैसेज ने बोला डिबेट कम करो, रिसर्च ज्यादा कर लो? नहीं, पैसेज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला. पैसेज ने बोला कि इस बात पे साइंटिस्ट को कंफ्यूजन है, एक रिसर्च रिसर्च हो गई है, एक डिबेट आई मीन एक एक डेफिनेटिव आंसर मिल जाएगा इस डिबेट का अगर ऐसा 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 हो जाए. यहाँ वो कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि रिसर्च ज्यादा कर लो, गप कम लगा लो. भाई हमने तो पैसेज में ऐसा कुछ बोला नहीं, और अगर हमने पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बोला तो वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैसेज बोलेगा वही सत्य वचन. विल रूल दिस ऑप्शन आउट, और जो ऑप्शन हम रूल आउट नहीं कर पाए थे विच इज द क्लोजेस्ट करेक्ट आंसर, दैट्स ऑप्शन बी. नाउ द नेक्स्ट वन. Local communities have often come in conflict with agents trying to exploit resources. So बड़ी सुंदर सी लाइन है. जो local communities हैं वो conflict में लड़ाई झगड़ा हो जाता है उनका with agents trying to exploit resources. भाई कोई भी अगर resource को exploit करेगा तो उससे तो कोई भी लड़ाई करेगा जाके. So इन local communities ने भी वही कर लिया. Now what are they? How are they doing it? At a faster pace for an expanding commercial industrial economy. तो हुआ क्या है, कुछ एजेंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को एट अ फास्टर पेस. और क्यों कर रहे हैं? फॉर एक्सपैंडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और उनसे कम्युनिटीज का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अक्सर, ऑफन. More often than not, such agents of resources intensification are given preferential treatment by the state. अब दूसरी कहानी क्या हुई कि यही वाले जो एजेंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एट अ फास्टर रेट फॉर कमर्शियली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, उनको स्टेट से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिल रहा है. चलो वही देखते हैं कैसे मिल रहा है. थ्रू द ग्रांट्स ऑफ जेनरस लॉन्ग लीजेस ओवर मिनरल्स और फिश स्टॉक. तो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है? उन्हें ग्रांट मिला है जेनरस लॉन्ग लीज का over mineral and fish stock. For example, the provision of material at, for example, or I'm sorry, or the provision of material at an enormously subsidized prices. ये दूसरा preferential treatment है कि भाई उन्हें जो provision of material है वो उन्हें subsidized कम पैसों में उनको मिल रहा है. स्टेट ने ये दो चीजें एजेंट्स को प्रोवाइड करी है. ठीक है. विद इनजस्टिस सो कंपाउंडेड, लोकल कम्युनिटीज. भाई अब लोकल कम्युनिटीज की नजर से देखो, पहले तो तुम एक्सप्लॉइट कर रहे हो रिसोर्सेज को, दूसरा तुम्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रखा है, तो ये इनजस्टिस कंपाउंड हो रखा है, बढ़ रखा है बहुत, मेनीफोल्ड. तो local communities at the receiving end of the process have no recourse except direct action. अब वो बेचारे क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्शन उन्होंने क्या लिया? Resisting both the state and the outside exploiters through a variety of protest techniques. I believe कोई भी जाके यही करेगा. इन बेचारों ने भी यही करा.
These struggles might perhaps be seen as a manifestation of a new kind of class conflict. तो ये struggle कैसे नजर आ रही है हमें? As a manifestation of a new kind of class conflict. Class conflict हो रखा है local communities का with that of the state and the agents who are exploiting the resources at a faster pace. Now that's what the passage is about. Simple and sweet passage. Now let's see. A new kind of class conflict arises from preferential treatment given to the agents of resource intensification, which the local community sees as unfair. So, एक new kind of class conflict arise हो रहा है from the preferential treatment given to the agents. लेकिन क्या हमने इसमें ये लिखा कि किसने वो preferential treatment दिया या क्या दिया? क्या ये ऑप्शन अपने आप में कंप्लीट लग रहा है? वेल लग रहा है या नहीं लग रहा है आई बिलीव लेट्स पुट दिस वन ऑन होल्ड ऑल्दो इसमें स्टेट नहीं गिवन है क्या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन है और वो क्यों कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें सो लेट्स सी the grant of long leases to agents of resource intensification for an expanding commercial industrial economy lead direct protest from local community which it sees as unfair. तो अब इसमें एक रिसोर्स का बात हमने कर ली कि लॉन्ग लीज उनको दे दिया फॉर एक्सपैंडिंग तो दूसरा भी तो था एक दे दिया दूसरा क्यों नहीं दिया आधा है ये भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लग रही है ओके preferential treatment given by the state to the agent of resource intensification for an expanding commercial industrial economy excavate makes it worse injustice to local communities and leads to direct protest from them resulting in a new type of class conflict okay looks complete let's put this one on hold. Local communities have no option but to protest against the agents of resource intensification and create a new type of class conflict when they are given raw material at subsidized prices for an expanding अच्छा यहाँ पर ये देख किसके लिए stand कर रहा है when they are given raw material at subsidized prices for expanding commercial industrial economy पहली बात किसने दिया ये भी missing है और ये दे कौन है यहाँ पर we don't know it's not clear so between C and D what do you think is a better answer choice जिसमें state की भी बात हुई थी preferential treatment की भी बात हुई थी इंडस्ट्रीज एक्सकबेट हुआ लोकल कम्युनिटीज की हुई थी एंड न्यू क्लास कॉन्फ्लिक्ट की भी हुई थी सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज जिसमें हमने शायद हर चीज की बात कर ली पॉसिबली सो ऑप्शन सी इज अ बेटर आंसर चॉइस नाउ लेट्स सी It is important for shipping companies to be clear about the objectives for maintenance and material management as to whether the primary focus is on service level improvement or cost minimization. So it's a good statement. See, shipping companies की बात करें हम categorically किस मतलब किस section? Maybe the shipping companies just. उन्हें clear होना चाहिए about the objectives for maintenance and material management. किस context में? उनका प्राइमरी फोकस क्या है सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट है या कॉस्ट मिनिमाइजेशन है इस चीज पे शिपिंग कॉरपोरेशन को शिपिंग कंपनीज को अपने ऑब्जेक्टिव्स फॉर मेंटेनेंस एंड मटेरियल मैनेजमेंट को क्लियर होना चाहिए क्या सर्विस लेवल को मेंटेन करें इंप्रूव करें या कॉस्ट को नीचे लाएं ये तो सभी की प्रॉब्लम है ऑफन व्हेन सर्टेन सिस्टम्स आर सेट इन प्लेस cost minimization objective and associated procedure become more important than flexibility required for service level improvement. तो generally क्या होता है जब हम कुछ भी प्रैक्टिस को सिस्टम को बना रहे होते हैं उसे सेट कर रहे होते हैं हम जो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं देन द फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड यहाँ पे राइटर ने कंपेयर किया है कॉस्ट मिनिमाइजेशन और सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट में हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं The problem really arises once cost minimization tends to focus on out of pocket costs, which are visible, while opportunity costs, often greater in value, are lost sight of. तो जब हम cost minimization को ज़्यादा importance दे देते हैं तो क्या होता है हमें दिखाई क्या देता है जो जेब से खर्चा हो रहा है वो तो हमें दिखाई दे जाता है लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो चीज़ों में से एक ऑल्टरनेटिव को चूज करने के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव पे जो आप नुकसान उठा रहे हो दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो हम लूज कर जाते हैं उस पर हम ध्यान ही नहीं देते क्योंकि वो जेब से नहीं निकल रहा होता so that's what the passage is about now let's see shipping companies have to either minimize costs or maximize service quality भाई उन्हें या तो कॉस्ट को कम करना है या मैक्सिमाइज करना है सर्विस क्वालिटी ओके ठीक बात है if they focus on cost minimization they will reduce quality
They should focus on service level improvement or else opportunity cost will be lost sight of. Now you haven't responded yet, but I would want to know इस ऑप्शन के लिए आपकी क्या ओपिनियन है। इस ऑप्शन में एक गलती है। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कैप्चर कर रहा है एसेंस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसमें एक गलती है। देखो क्या, राइटर ने यहाँ पे ओपिनियन दे दिया अपना, दे शुड फोकस ऑन सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट, जबकि अगर आप पैसेज को पढ़ोगे उसने बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें दी। ऐसा होता है, मतलब उनको दो चीजों को देखना होता है, वो ज्यादातर कॉस्ट को देखते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वो मिस कर देते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो विजिबल नहीं होती। सिंपल सी तीन या चार स्टेटमेंट्स थी। यहाँ उसने लिखा उनको सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, दे शुड फोकस। ये तो एडवाइस हो गई, राइटर ने तो पैसेज में सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया था। जैसे ही डिस्टॉर्शन हुआ हम उस ऑप्शन को रूल आउट कर देंगे। सी, बहुत छोटे वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या डिटर्मिनर्स, जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पर। अगर हम इन वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, अपने पैसेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग को फोकस करें, तो हम हमेशा सही आंसर निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स सी। Shipping companies should determine the primary focus of their maintenance and material management. ठीक बात है। Focus on cost minimization may reduce visible cost, but ignore greater invisible cost and impair service quality. Well, कुछ हद तक तो राइटर ने यही बोला था। Let's put this one on hold. Therefore, shipping companies must be clear about the primary focus. Well, it is important for them. They must be clear. थोड़ा सा difference of opinion तो है यहाँ पर. Of their maintenance and material management before embarking on cost minimization. बहुत सारी चीजें हमने मिस आउट कर दी यहाँ पर, एंड कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स भी ठीक नहीं लग रहा। आई बिलीव ये आंसर तो रूल आउट कर सकते हैं हम। आई होप यू विल एग्री विद मी। Shipping companies should focus on quality level improvement rather than cost cutting. भाई उनको फोकस करना चाहिए on quality improvement rather than cost cutting. Cost cutting will lead to untold opportunity cost. They should have system in place to make service level flexible. बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद इन सिंक नहीं है उस इंफॉर्मेशन से जो हमें राइटर ने दी है। सो आई बिलीव यस वी शुड गो विद ऑप्शन बी, the next one. Okay, now there is a full-fledged passage for us to solve. So, because I understand कि screen में शायद पढ़ना इतना clear नहीं होगा, so we'll read the passage together very quickly. But before that, we'll take a look at the questions first, and then we'll go back to the passage. So, reading the question first and then going back to the passage is always a good strategy. And these questions have been picked up from Arun Sharma. So, make sure that you pay special attention. Now, let's see. बाय ऑलवेज बी, आई गेस अभिषेक सिंह। और कुछ सीखा या नहीं सीखा, एक चीज हमने सीख ली इस लेक्चर में कि ऑप्शन बी ज्यादातर सही आंसर होता है। बट देन ये सिर्फ ज्यादातर होता है, हमेशा नहीं। सो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड। Let's see. Now let's see. So the question says, according to the passage, all of the following are not true except. Okay. तो हमें except statement वाले questions में advantage क्या होता है? तीन statements हमेशा एक direction में होंगे, सिर्फ एक option अलग direction में होगा। Go for the odd man out, चाहे आपको question समझ में आए या नहीं आए, जो odd statement होगा वही answer होगा। Now let's see. It can be inferred from our passage. Inference based question है। Inference based questions के लिए हमें passage को समझना बहुत जरूरी है, otherwise you don't get the answers right. Okay, according to the passage, it can be said that, okay, maybe direct, maybe indirect, we'll have to see. According to the passage, factors affecting the temperature profile of Arctic do not include. तो categorically हम सिर्फ Arctic की बात कर रहे हैं यहाँ पे, you have to keep that in mind. According to the passage, most important factor for global warming is, I guess, looks like a direct question to me. Now let's see. These nuts, we will discuss that later. Now let's come back to the passage and let's read it together. So this says climate change pundits have always been blowing hot and cold over melting ice caps. Blowing hot and cold matlab difference of opinion. They're swaying from one opinion to the other. So एक fixed opinion नहीं है. So they're moving. I mean, say one. Sometimes they have this opinion, sometimes they have the other opinion. Yes, sir, it will. So they're blowing hot and cold over melting ice caps, rising sea levels, unusually hot summers on one hand, and receding deserts, shrinking biodiversity, and colder winters on the other. तो इन चीजों को लेकर तो उनको कोई fixed opinion ही नहीं है. Sometimes they say this, sometimes they say that. Climatologists are, however, unanimous in their opinion
That regional variation notwithstanding, the Earth as a whole is becoming warmer and largely due to the increased human activity. Let's just stop here and let's understand हमें given क्या है. देखो, पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें दो लेवल पे देखना चाहिए. गिवन क्या है और वो गिवन क्यों है. गिवन क्या है वो तो हमने पढ़ लिया कि उनको कुछ चीजों को लेके मिक्स्ड ओपिनियन है, लेकिन एक चीज को लेकर वो यूनानिमस है. यूनानिमस मतलब इन अग्रीमेंट है एक चीज के लिए. दे हैव अ फिक्स्ड ओपिनियन कि आई एम सॉरी कि अर्थ गर्म तो हो रही है और हमारी वजह से हो रही है, लेकिन किस चीज के लिए फिक्स्ड ओपिनियन नहीं है. कि मेल्टिंग आइस कैप्स के लिए नहीं है, राइजिंग ओशन लेवल्स के लिए नहीं है, या रिसीडिंग बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं है, या कोल्ड विंटर्स के लिए नहीं है. सो फॉर सर्टेन थिंग्स दे डोंट हैव अ फिक्स्ड ओपिनियन, बट फॉर समथिंग दे डू हैव अ यूनानिम, आई मीन दे आर यूनानिमस इन देयर अप्रोच, इन देयर ओपिनियन that garam to earth ho rahi hai. Now let's see. And yet, as a continent, Antarctica would seem to be bucking the trend. लेकिन अब यहाँ पर yet आया, which shows contrast here, कि भाई Antarctica जो है is bucking the trend. Bucking the trend is not following the norm. वो बाकियों से अलग चल रहा है. Recent reports quoting American scientists from South Pole say that while temperatures in every continent have risen over the past century, it has become appreciably colder over the last 35 years and continues to cool. बाकी सब गर्म हो रहे हैं या अकेला ठंडा होता जा रहा है? Becoming the only one of Earth's seven continents to react differently to global warming. The world's average temperature over the last 100 years, has risen by this much degrees Celsius a decade, and the average has went up by this much between these two decades. In Antarctic, on the other hand, temperatures fell by this much a decade. Traditional theories of climate change have held the effect of global warming ought to be magnified at the poles. तो उनको लगता है कि वो होने तो चाहिए थे magnify यानी कि ज़्यादा at the poles. Nonetheless, in spite of that, recent research points out that while Arctic is indeed getting warmer, Antarctic is getting cooler. This will mean that previous estimates of rising sea levels that include melting ice caps both at north and south poles will have to be suitably revised. So, what is the mystery behind the cooling of the white continent? Now, see, if I understand, so factual सा passage है, पढ़ के समझ में आ रहा है राइटर क्या कहना चाहता है, लेकिन क्या ये समझ में आ रहा है कि राइटर ये क्यों कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहे हैं, वो हमें क्या बताना चाहता है इस पैसेज से. सो probably the writer is giving us information about the mixed opinion that the global climate change pundits have about the earth that is getting warmer and the kind of impact it has on one pole and that on the other pole. I guess let's move ahead and read the passage. I see there are some questions. ये लाइव क्या डेली होगा या कितना पढ़ना चाहिए या फिर अरिहंत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. वेल आई क्विकली आंसर दीज क्वेश्चंस. अरिहंत एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप आरसीज प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हो, वो कैप प्रैक्टिस कर सकते हो. इट्स अ रिलायबल सोर्स. यू शुड डू इट, प्रैक्टिस फ्रॉम इट. एंड एज फार एज अरुण शर्मा इज कंसर्न्ड, ये तब करो जब आपकी प्रिपरेशन में एक लेयर आप बना चुके हो, आप एक बार सब प्रैक्टिस कर चुके हो, देन कम हियर टू सी हाउ गुड योर प्रिपरेशन इज. नाउ कमिंग बैक टू द पैसेज. Since most of the inhabited and industrial countries are clustered close to the Arctic, polluting emissions waft, so they move with the wind across the North Pole, creating greenhouse effect. So pretty simple to understand. तो आर्कटिक के पास, यहाँ आर्कटिक है, आर्कटिक रीजन. सो यहाँ पर हवा से उड़कर क्योंकि गैस जाती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. आई गेस यू अंडरस्टैंड व्हाट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज. अगर नहीं भी पता, यू डोंट हैव टू नो. पैसेज की खूबी क्या होती है, जितना लिखा है उतना ही समझो, ज्यादा की जरूरत नहीं है. वार्मिंग एयर एंड लूजनिंग आइस शीट्स. Complex interplay of ocean currents appear to have changed temperatures, cooling the southern ocean around the Antarctic and transferring the pole's temperature profile. So Antarctica's hard desert valleys are turning cooler, setting off a series of ecological consequences in the region. Here's there's another contradiction. Reports from New Zealand describe how there is a feat of global warming inducing breakaway icebergs in the southern hemisphere. भाई एक contradiction और हो गया. Southern hemisphere में अंटार्कटिका है, वो तो ठंडा हो रहा है, लेकिन southern hemisphere में न्यूजीलैंड है, वो गर्म हो रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पर there is a surfeit of global warming, there is an excess of global warming और उससे icebergs break हो रहे हैं. So there's another contradiction that the writer has talked about. Now, I guess let's take a look at the question.
So according to the passage, all of the following are not true except Um, it's a very good question, the Learning Hub. I would want to answer this towards the end of the session, all right? Remind me. Effect of global warming on Antarctica is on expected lines. भाई हमने सोचा था सब गर्म हो रहे हैं एंटार्क्टिका भी गर्म हो जाएगा मगर वो तो नहीं हो रहा इट इज बकिंग द ट्रेंड इट इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्म ये तो नॉट ट्रू हो गया हमें चाहिए जो नॉट ट्रू नहीं हो दैट इज इनडायरेक्टली बोला जाए तो जो ट्रू होगा वो हमारा आंसर होगा Fall in temperature in Antarctic is in accordance with the traditional theories. अब ये भी not true statement है क्यों? क्योंकि fall in Antarctic is not in accordance with traditional theories. It is bucking the trend. Remember, that's what the writer said. Global effect of global warming is maximum at the pole. भाई राइटर ने बोला था it ought to be magnified. यहाँ पे maximum होना चाहिए मगर वो है ये तो राइटर ने नहीं बोला था. So this is also a not true statement. Effect of global warming on Antarctica is on unexpected lines. Now, this is a true statement. ये तो ऐसा नहीं हुआ. It's not in accordance with what they had thought of. So, yes, the answer is D. It can be inferred from the passage that our knowledge and our theories about global climate change fails to explain what's happening across the globe. Now, see, there is a line that is there in the passage that says, it's here, somewhere around here. So they say this will mean that previous estimates of rising sea levels that are including melting ice caps on both north and south poles will have to be revised. भाई कुछ है जो हमें रिवाइज करना पड़ेगा. क्यों रिवाइज करना पड़ेगा? कि हमारे पुराने एस्टिमेट्स गलत हैं. तो हमें अपनी थ्योरी को रिवाइज करना पड़ेगा. That means the question very clearly says कि जो हमारी नॉलेज और थ्योरी है वो फेल हो रही है इसीलिए तो उसे रिवाइज करना पड़ेगा कैन इट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज आई गेस यस दिस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज नाउ लेट्स सी it is a matter of great contradiction that we fail to understand the full import of global climatic change. भाई क्या हम पूरा global climatic change का import समझ नहीं पाए हम तो बात कर रहे थे सिर्फ northern और southern hemisphere की plus we were talking about I mean did we talk about and we are talking about the full import. I guess this is an extreme term here and this option should be ruled out. Extreme options are not the right answers. We could not understand the importance. Okay, did we talk about the importance of global warming? कितना जरूरी है global warming? We didn't talk about that. We just talked about what is the impact of global warming on two different hemispheres. It is difficult for us to understand the full implication of global. I think D and B are almost same. Both should be ruled out. The threat of global warming is accentuated due to what is happening in Antarctica. Accentuated, emphasized. Now, सिर्फ Antarctica में जो हुआ उसकी वजह से कुछ emphasize हो रहा है? Well, the writer talked about a lot of different things, not just about Antarctica. And that too, the threat of global warming क्या उसकी वजह से emphasize हो रहा है? That's not what the writer talked about. So if the writer didn't talk about it, this cannot be the answer. The right answer here will be option A. According to the passage, it can be said that Antarctica has become colder than other continents of the world. Now, see, this one is interesting. That's great, Shreyansh. So, it has become colder than all the other continents of the world. Let's go back to the line and read it. Let's see what it said. So, Antarctica has become appreciably colder over the past 35 years and continues to cool, becoming one of the Earth's only seven continents to react differently to global warming. भाई पिछले 35 years में एंटार्क्टिका बाकी कॉन्टिनेंट से अलग रिएक्ट कर रहा है बट क्या राइटर ने बोला कि वो बाकी कॉन्टिनेंट से ज्यादा ठंडा है हाउ डू वी नो कि बाकी कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं क्या राइटर ने बताया वो गर्म है वो ठंडा है वो सबसे गर्म है वो सबसे ठंडा है एंटार्क्टिका सबसे ठंडा है राइटर ने सिर्फ ये बोला वो ठंडा होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है मगर उसने ये नहीं बोला कि वो सबसे ठंडा है या वो बाकियों से ही ठंडा है कंपेयर नहीं करा इस तरह से कंपेयर नहीं करा उसने सिर्फ ये बोला वो वो अलग रिएक्ट कर रहा है बाकी सबसे सो we cannot say that it has become colder than the other continents of the world. So I guess this option should be ruled out. Has become colder than Earth over the last 35 years. Earth से writer ने उसे compare बिल्कुल भी नहीं करा. Decade growth in temperature is much higher for Antarctica than the Earth itself. Now see, again, उसका temperature compared to Earth writer ने बिल्कुल नहीं करा था. Now let's see.
The average temperature rise for decade 1979-98 was more than average rise in temperature over the last 100 years. ये बात राइटर ने जरूर बोली है factually. Let's see where. First of all, let's clear the screen. So, see. राइटर ने बोला कि हर 10 साल में, हर 100 साल में, 10 साल में 0.06 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है। और 79 से 98 तक हम ऑलमोस्ट पीरियड ऑफ 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं। 0.19 का डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। अगर नॉर्मली मैथ की बात करते तो 0.12 का डिफरेंस आना चाहिए था। यहाँ पे 0.07% ज्यादा है। तो एक एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 0.12 से ज्यादा है। तो यही बात राइटर ने भी बोली, यहाँ पर क्वेश्चन ने भी बोली कि पिछले 20 सालों में average rise से ज्यादा rise हुआ if I talk about a period of 100 years. So yes, that's what the passage even supports. Both the Arctic and Antarctic are getting cooler. ये distortion है। आर्कटिक ठंडा हो रहा है, आर्कटिक तो गर्म हो रहा है, एंटार्क्टिका ठंडा हो रहा है। तो distorted statement should be ruled out at the first instance. So I guess we've got the answer, which is option D. According to the passage, factors affecting the temperature profile, Arctic does not include. Now see, ocean current, greenhouse effect, atmospheric pollutants, warming of the air. So let's see. See. So क्या बोला था उन्होंने? So polluting emissions waft across the North Pole. They create greenhouse effect. They warm the air and loosen the ice sheet. So ये सब तो हमने आर्कटिक के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी. Complex interplay of ocean currents appear to have changed temperatures, cooling the southern ocean around the Antarctic. तो ocean current किसके लिए थे? एंटार्क्टिक के लिए थी, आर्कटिक के लिए नहीं थे। हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है डायरेक्टली क्या चीज आर्कटिक को अफेक्ट नहीं करता। सो आई गेस वी कैन सेफली से कि ओशन करंट्स आर्कटिक को अफेक्ट नहीं करता बिकॉज वो किसको अफेक्ट कर रहा था? एंटार्क्टिका को अफेक्ट कर रहा था। सो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए। Shreyans, that's up to you, child. Now let's see. The next one. According to the passage, the most important factor for global warming, well, this one is, like I said, is a direct question. Um, hot summers, increased human activity, shrinking biodiversity. आई थिंक ये डायरेक्टली राइटर ने स्टेट करा था यहाँ पर जब उसने बोला था कि एक चीज के लिए उनका यूनानिमस ओपिनियन है क्या कि अर्थ गर्म हो रहा है और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से गर्म हो रहा है। नाउ लेट्स सी, लेट्स कम बैक एंड सी व्हाट्स द आंसर। सो हॉट समर नहीं, इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी हाँ, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। द आंसर वाज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज, सो दैट वाज द आंसर। Now, students, we will talk about some vocabulary. So आज के सेशन में हम दो चीजों पे बात करने वाले थे। एक था how to deal with reading comprehension passages, and the questions that I picked up for you were from your favorite writer Arun Sharma. Now we'll take a look at some questions based on vocabulary. Now, before I start that aspect with you, it's my duty to tell you आप अपना word bank कैसे enhance कर सकते हो. So one method that I strongly recommend to enhance your word bank is called the root method. यहाँ पर हम कुछ रूट्स लेते हैं जो प्री एग्जिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इन रूट्स पे हम कुछ नए लेटर्स अफिक्स करते हैं। सो यू समटाइम्स प्रीफिक्स सम लेटर्स, समटाइम्स यू सफिक्स न्यू लेटर्स, एंड एक नया वर्ड बन के आता है। नाउ अगर मुझे रूट का मतलब पता हो तो जो नया वर्ड बन के आएगा वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड होता है, उसका अपना एक वजूद होता है, उसका अपना एक मीनिंग होता है। लेकिन ये मीनिंग जो होगा, Keshav, we will do more RCs in a session that will follow. आज हम बस इतना ही आरसी और थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे, एंड we'll try to learn the strategies here more than practicing the RCs. Yeah, it does alter the meaning. So, the new derivative, the new word that is derived from the root word is an independent word. But beauty है क्या है कि अगर आपको root का मतलब पता है तो आप एक intelligent guess ले सकते हो कि जो नया word हमने बनाया है उसका meaning क्या हो सकता है. So we'll take a look at one root word today and we'll understand how it works. So the word is anthrope. Now, anthrope means human being.
एंथ्रोप एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। तो अब देखो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं विद व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स आर एंड लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, द न्यू डेरिवेटिव्स दैट वी हैव डिराइव्ड। सो एंथ्रोपोलॉजी एक वर्ड है। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एंथ्रोप का मतलब था ह्यूमन बीइंग, पुट देम टुगेदर क्या मतलब बन सकता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक वर्ड है मिस एंथ्रोप, डू यू सी द वर्ड एंथ्रोप हियर? अब एंथ्रोप का मतलब था ह्यूमन बीइंग, मिस का मतलब होता है हेट्रेड, तो मिसएंथ्रोप क्या हो गया? somebody who hates mankind। बहुत सारे पॉपुलर एग्जाम्पल हैं ऐसे लोगों के जो दे showed their hatred for mankind through their acts। philanthrope, now phil का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब है ह्यूमन बीइंग, तो जो इंसान से, इंसानियत से प्यार करता है दैट इज philanthrope। वेल एंथ्रोप और एंथ्रोपोज बोथ, श्रेयांश। नाउ एंथ्रोपॉइड, नाउ सी एंथ्रोप ह्यूमन, ऑइड मीन्स शेप, सो कोई भी चीज जो ह्यूमन लाइक शेप हो वो एंथ्रोपॉइड है। वन गुड एग्जाम्पल कुड बी monkeys or apes। Now, this word is anthropomorphism. Now, it's a beautiful, beautiful figure of speech। Anthrop का मतलब है human being। Well, I won't say morphism का मतलब ये होता है, but then if you attribute human characteristics to God, animals, or objects, where these whether God, animals, or objects, they behave like human beings. They show human tendency. They show love, the tendency to love, to hate, to get hurt. They sing and dance. Then you say that you've used anthropomorphism here. So, for example, your Mickey Mouse singing and dancing. Maybe your Mm, Lord Zeus from Greek mythology, very good examples of anthropomorphism, where we've given human characteristics. So we make them sing, we make them dance, we make them talk to us, or maybe the kettle of Beauty and the Beast, all very good examples of anthropomorphism. Now, anthropocentrism. Now, see, anthrop and centrism. Now, centrism, centered, anthrop, human centered. So, it's a point of view. It's just a point of view that humans are the holders of primary standing. That is, they are at the center of the universe, most important beings. That's just a view. But then, since it is around anthrop, that is human beings, we call it human centered view. Now, we'll take a look at certain questions. Now, see, these sort of questions are expected in all the entrance tests that you can think of. Morph definitely means change, Prachi. It does. Morph means change, transition, transit. Um, Yes, centric means basis. Yes, it does. Now, I guess let's understand the relevance of this question type before we start discussing the questions. So, you can expect questions, the fill up sort of questions in any entrance test, say right from GIPMAT to NPAT to Rohtak to IPMAT Indore to CUET, Crest University, all sorts of entrance tests. So they do give questions like these. Some exams, some entrance tests focus more on these questions, while the others not so much. But you can expect questions around these sort of questions in the entrance test. Now, to a great extent, you need to have, um well, you need to have a good understanding of you need to have good understanding of the words and the meaning of the words, and the other thing that helps you get to the answer is whether you understand what part of speech is required in the given statement and what part of speech is given as the plausible answer. Now let's see. The leading newspaper has revealed that the PM had. Now, had will take the third form of the verb. Now, so anything that is the third form of the verb will be a good fit here, and you can eliminate the other choices. So, countenance means face. So, it's a noun. Um, Acquiesced, it's a verb which is followed by in or to. So, acquiesced simply means when you agree to something, whether you like it or not. Forewarned, when you give a prior warning, again, it's a verb, maybe in the third form.
Accede is verb, but it's in the base form. Acceded would have been probably the third form. And espionage is spying actually on someone or something. It's a noun. So if we understand the requirement here, we will be able to rule out option A, option D, and option E. Agreed? So you're left with acquiesced and forewarned. So let's take a look at the surrounding context now, and let's understand what the possible answer is. So the leading newspaper has revealed that the PM had what? Acquiesced or forewarned in the secret. What do you think? He had forewarned in the secret or he had acquiesced in the secret? Well, I believe yes, the answer would be option B, C-headache, because it takes in. You can use acquiesce with either to or in. So you acquiesced in a given situation, you acquiesced to a demand. So it works both the ways. So I believe the answer here would be option B. The disciplinary committee has, again, if you have has here, what do you need? The third form of the verb, easy peasy. So anything which is um, the third form of the verb will be the answer, and the other options can be ruled out. Extended, authorized, clamped, embargo, intended. Embargo is a noun, which is a ban, should be ruled out because we need the third form of the verb here. So, yes, I guess I agree with you. Forewarned will take against, it would not take in. So, extended the use of detention, authorized the use of detention, clamped. Now, clamp is putting two things together, and intended the use of what do you say? Detention. So, clamp nahi hoga, it's a misfit here. Now, A, B, and E are three possible answers which can be good fit here grammatically. Now we have to understand contextually what will be the right answer here. See, so have they extended the use of detention or they have authorized? So when you authorize something, you officially say, okay, this should be done. And when you extend something, you kind of elongate something, enlarge something. Or they intended the use of detention. I believe, yes, the answer here would be they authorized the use of detention because the passage the line doesn't state that they have kind of uh, something that was already there and they decided to probably elongate it, so it's not stated, so I guess yes, B should be the right answer here. The king has, again, we need the third form of the verb. So, conceded to a proposal, allied to a proposal, assented to a proposal, opined or identified to a proposal. You don't identify to a proposal, you don't even opine to a proposal, you can assent to a proposal. Well, ally, like getting friendly with somebody, you don't ally to a proposal and you don't even coincide to a proposal. So two things happening at the same time. So I guess very clear answer choice here will be assented, which means giving saying yes to something, and generally assented is followed by to. So there are two reasons. For which one, Keshav? For this one, you're asking about question number 13. Um, Keshav, I'll wait for your answer for your question. For now, assented to, because coincided, you don't coincide to something, you coincide with something. So the two will not match with coincide. That is two things happening at the same time. So I guess let's go with option C, that is assented. The committee was in favor of the proposal, but now see, so if you see the connector, but what do we understand? We understand that something contrary has happened. So, but will always take the positive negative relationship. They were in favor, so positive. But the president, well, probably we need something negative here. Now, let's see. Assented means saying yes, agreeing. Condoned, again, you reluctantly say yes to something. Sanctioned, you officially say yes to something. So if they were in favor and then there is a but here, we need something that says, okay, president was not in favor or he was against it. Now, these three, though in past tense, but they agree, they show agreement rather than disagreement. So I guess these three options should be ruled out. Countenance is a noun. We need a verb here, so will be ruled out.
Now, veto is the capacity or the power to say no. Now, veto can work like a noun, vetoed can work like a verb. So it's a good fit. This will be the right answer here. The cabinet has, again has, we need the third form of the verb here, a proposal to change the way private educational institutions are funded and managed. Now, we essentially need third form of the verb here, actualize, though a verb, but in present form. Now, I hope you know that if you add IZE to an existing word, the resultant word will always be a verb. Endorsed, okay. When you endorse something, you publicly support it. So the committee endorsed the decision. So that means publicly, the committee publicly supported the decision. Approve, base form of the verb will be a misfit here. Franchised. Now, when you franchise something, you allow someone to use your name, your to work under your flagship. So I guess is a misfit here. Acceded, I guess we have already discussed, will take two. Now, when you accede to something, you say yes to something, you agree to something, but the catch here is it takes two. So I guess the clear winner here is endorsed. The cabinet has endorsed the proposal, so they have publicly supported the proposal for XYZ. So you don't have really have to worry about the remaining information. The next one, Divyansh's disciplined and dash study habits. So if I use the connector and, I join similar parts of speech. So if this is an adjective, I essentially need an adjective. If this is a positive adjective, I essentially need a positive adjective here in this blank. Now let's see. Painstaking, an adjective. It means when you put in a lot of effort, you work very hard at something. It's positive adjective. Sedulous simply means diligent. Unhealthy, negative, although an adjective, but unhealthy. So we need something that's positive. Do you understand why? Disciplined and will all see, but will show positive negative relationship and will show similar relationship. So taciturn means again an adjective. Taciturn means unspoken, quiet. So if somebody is taciturn, he chooses to stay quiet. He prefers being quiet. Maybe quiet by nature, taciturn. Pecuniary relates to money. So I guess it's a misfit. These two will be misfits here. So between A and B, they both mean hardworking. I mean, this means putting in a lot of effort, and sedulous simply means being diligent. So technically, both are a good fit here, and it will be difficult for us to choose the right answer. Technically, painstaking also means sedulous. It also means diligent. So trust me, both are very, very close. I guess let's go with sedulous, although it's difficult to say to rule painstaking out. Maybe we can rule painstaking out because it means putting in a lot of sincere effort. So he's disciplined and he's diligent. So, we'll just balance things out like this. And yes, Shreyansh, tacit, another root word that means silent. That's a beautiful root word, I would say. So I guess we'll settle for the word sedulous here. Now, let's see. The celebrated trainer's dash for helping his trainees to learn and achieve their goals was highly, now see, propensity, commendable, distinction, enigmatic, predilection, reprehensible, derision, admissible, decisiveness, desired. Now see, the difference between the previous question and this question is that this question has two blanks. Now, some of us might feel that dealing with fillers where there are two blanks is slightly more difficult than dealing with the questions where there is a single blank. But these can also be easy. Now, see, there are certain tricks or certain strategies that help us get the answers always. Now let's understand. See, getting the answer is important, I understand. But if you understand certain things, you will be able to feel confident about your choice of answers. Now, first of all, when there are two blanks, you should see what word fits in both the blanks. So let's say in option E, one word fits in the first blank, but the second word doesn't fit in the second blank. That means it's a misfit. This option cannot be the answer. Similarly, if the second word fits in the second blank, but the first word doesn't fit for any reason, maybe it's grammatical misfit hai, ya
कॉन्टेक्चुअली मिसफिट है फॉर एनी रीजन, अगर वो वहां फिट नहीं हो रहा तो वो पूरा ऑप्शन हम रूल आउट कर सकते हैं. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू सी क्रक्स ऑफ द स्टोरी, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पता तो हमें मीनिंग ही होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है. लेकिन अगर मुझे मीनिंग नहीं पता, कम पता है, और फिर भी अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से काम करूं, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करूं, तो भी हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन से बहुत हद तक कुछ ऑप्शंस रूल आउट करके इंटेलिजेंट गैस लगा सकते हैं वहां पर. दैट्स स्मार्ट वर्क. by having said that, I strongly advocate पढ़ के जाना चाहिए, मेहनत करके जाना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए हम क्या करें, बिकॉज दिस इज अ लॉट इज एट स्टेक. हमारा पूरा फ्यूचर, हमें हमारा फेवरेट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है. एंड वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि बहुत सारे सेक्शंस आपके ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी. सो यू विल बी डू एबल टू डू डायरेक्ट क्वेश्चंस. नाउ इवन इफ आई टॉक अबाउट सिंपलर पेपर्स जो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, लेट्स से जिप मैट, जहाँ पर आपको वो डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, तो वहां तो आपके पास ये सोचने का भी टाइम नहीं है. जैसे यहाँ पर तो आप ये भी सोच सकते हो कि अच्छा ये यहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां पर तो या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा. सो बहुत इजी पेपर्स भी बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है. सो जब भी आप वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस करो, मेक श्योर कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो. एंड try to use the word cluster method and the root method अपना vocabulary को enhance करने के लिए. Alright, now let's take a look at this question. So पहली बात, celebrated trainer, कुछ अच्छे word हैं जैसे celebrated. Celebrity कौन होते हैं? जो लोग famous होते हैं. तो celebrated trainer कौन हो गया? जो फेमस ट्रेनर है. तो फेमस ट्रेनर्स डैश फॉर हेल्पिंग हिज ट्रेनीज टू लर्न एंड अचीव देयर गोल वाज हाईली. अब यहाँ पर हम ये नहीं समझ पा रहे कि दोनों पॉजिटिव होंगे कि दोनों नेगेटिव होंगे. क्या वो अच्छा कर रहा था मदद करके, या वो नहीं कर रहा था मदद तो कुछ खराब हो रहा था, हम ये असरटेन नहीं कर पा रहे. लेकिन क्या हम ये जज कर पा रहे हैं कि अगर यहाँ खराब वर्ड होगा, नेगेटिव कॉनिटेशन का वर्ड होगा, तो यहाँ भी नेगेटिव होगा. भाई अगर वो हेल्प नहीं कर रहा था तो उसको बुरा बोला होगा, लेकिन अगर वो हेल्प कर रहा था तो उसको हाईली रिकमेंड किया होगा, या उसकी तारीफ करी होगी, या उसे अप्रिशिएट करा होगा. तो एक चीज जो क्लियर है इस गिवन इंफॉर्मेशन से, कि जो रिलेशनशिप हमें चाहिए वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या वो दोनों नेगेटिव होंगे. नाउ let's take a look at the word. So propensity means uh, tendency, the liking, the preference. Commendable is a positive word which means to appreciate, to praise someone. So it's essentially an adjective. Distinction, अलग होना किसी चीज से. And enigmatic, mysterious होना. Now, do you think uski the distinction for helping his trainees to achieve their goal was enigmatic, was highly enigmatic, वो बहुत mysterious था? Does it make sense? Okay, predilection simply means again preference, and reprehensible means something that's deplorable, जो कि बहुत अच्छा नहीं है. So उसका preference था कि मैं मदद करूं, और ये चीज reprehensible थी, deplorable थी, जो चीज पसंद नहीं आ रही थी, क्या कुछ ऐसा था? ये relationship सही है क्या? Derision होता है to mock और to ridicule someone, किसी को नीचा दिखाना, किसी को मॉक करना, किसी को इंसल्ट करना, डिरिजन होता है. ये डिरिसिव होते हैं वो लोग जो किसी को मॉक करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं. सो अगर उसका डिरिजन था किसी को हेल्प करने के लिए, तो वो एडमिसिबल था, जो कि एक्सेप्ट कर सकते थे. तो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप बन रही है. आई थिंक दिस ऑप्शन शुड बी रूल्ड आउट बिकॉज इट डजंट रियली गो विद व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. Decisiveness is your ability to stand by what you say. Desired, जो चीज जरूरत है, जो चीज हम चाहते हैं. I guess desired, we understand what desired is. Now let's see, what do you think could be the right answer here for this one? So let's see हम कौन कौन से options को rule out कर सकते हैं यहाँ पर. So we can safely eliminate option D for the reasons stated already, and option C because
अगर उसे प्रेडिक्शन था, उसको प्रेफरेंस था, तो वो डिप्लोरेबल कैसे हो सकता है? द रिलेशनशिप डजंट रियली वर्क दैट वे if we rule out this option. And again, enigmatic is not a very good choice for options for the second blank. So you're left with option A and option C. So उसकी decisiveness थी और ये बहुत desired थी या उसकी टेंडेंसी थी टू हेल्प हिज ट्रेनीज और वो बहुत अप्रिशिएटिव मतलब ये चीज कमेंडेबल थी, इसकी तारीफ कर सकते थे. डोंट यू थिंक दैट ऑप्शन ए इज अ फार बेटर आंसर चॉइस देन ऑप्शन ई? Let's stick to that, and that's your right answer. The next one. In the plot of most Bollywood movies, there is or are characters with dash intentions whose primary role is to try to dash the handsome hero in his noble mission. अब मोस्ट बॉलीवुड मूवीज में एक के प्लॉट में क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसकी कुछ इंटेंशन होती है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हैंडसम हीरो को उसके नोबल मिशन में कुछ करना होता है. नाउ वी डोंट नो कि ये क्या होगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो हम समझ पा रहे हैं कि अगर उसकी अच्छी इंटेंशन होगी तो वो हैंडसम हीरो को सपोर्ट करेगा, और अगर उसकी खराब इंटेंशन होगी तो वो हैंडसम हीरो को अपोज करेगा. तो जो भी रिलेशनशिप होगी, या तो वो पॉजिटिव होगी वर्ड्स की या नेगेटिव होगी. क्लियर? नाउ लेट्स सी. फर्टिव एक बहुत अच्छा वर्ड है. फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेटिव या फिर क्लैंडस्टीन या फिर कोवर्ट. अबेट होता है टू एनकरेज बट फॉर रॉन्ग कॉज. तो भाई कोई कुछ गलती कर रहा है और आप उसको जाके सपोर्ट कर दे रहे हो तो आप उसे अबेट कर रहे हो व्हेन यू आर एनकरेजिंग समवन इन समथिंग दैट्स नॉट सो राइट, समथिंग दैट्स रॉन्ग. मेलोवलेंट एक रूट वर्ड है. मैल एक्चुअली एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है evil. सो इफ somebody has malevolent intentions, उसकी बैड intentions होती हैं. इसका ऑपोजिट होता है benevolent. Now bene means good intention. Unsavory simply means unpleasant, and depict means to show. Throat, another cluster जिसकी मैंने बात शायद अभी तक आपसे नहीं करी. एक बहुत अच्छा मेथड होता है आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का, जिसे हम बोलते हैं वर्ड क्लस्टर मेथड. यहाँ पर हम जो भी वर्ड लेते हैं उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को हम एक सेम जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं. एंड जब भी आप ये वाला वर्ड पढ़ोगे तो यस श्रेयांश, आई अग्री विद यू. So throat means to stop or maybe to obstruct. अब इसका अगर क्लस्टर मुझे बनाना हो इस वर्ड का तो वो कुछ ऐसे बनेगा. अगर कोई इम्पीड कर रहा है, नाउ लेट्स सी, जो वर्ड होगा ना उसका जो क्लस्टर होगा वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा. तो जैसे थ्रोट एक वर्ब है विच मीन्स टू स्टॉप या किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी के रास्ते में रुकावट डालना. एक वर्ड इसका जो क्लोज सिनोनिम है वो है इम्पीड, यानी कि रुकावट डालना या हिंडर या फिर फॉइल या फिर स्टॉल या फिर preclude. तो ऑल द वर्ड्स दे कैन फॉल इन द सेम क्लस्टर यहाँ पर. एंड ये सब वर्ब्स हैं. अगर हम किसी को स्टॉल कर रहे हैं या फॉइल कर रहे हैं या हिंडर कर रहे हैं या इम्पीड कर रहे हैं या थ्रॉट कर रहे हैं तो हम उसको रोक रहे हैं, हम उसके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी. Well, we've discussed the word. So thwart and obstruct, same. Derail होता है किसी को ट्रैक से नीचे लेके जाना. So an inappropriate means जो चीज़ appropriate नहीं होती. Now let's see. I guess let's just clear the screen and let's see what could be the answer. So in the plot of most Bollywood movies एक character होता है जिसके कुछ intention होते हैं, secretive intention होते हैं, और वो अबेट करता है हीरो को इन इस नोबल मिशन. अब अबेट का तो नेगेटिव कॉनोटेशन था क्योंकि यहाँ पर हम गलत काम के लिए एनकरेज कर रहे थे. अगर उसका नोबल मिशन है तो हम उसे गलत काम के लिए कैसे एनकरेज करेंगे? सो आई गेस ऑप्शन ए विल बी रूल्ड आउट. मेलोवलेंट इंटेंशन था तो मेलोवलेंट थी खराब इंटेंशन. ओके, गलत बना दिया, माइनस. एंड थ्रॉट का मतलब था ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, रुकावट बनना.
तो उसकी खराब इंटेंशन होती है और वो उसको रोकता है उसकी नोबल मिशन में, लुक्स लाइक अ गुड फिट। नाउ लेट्स सी, अनसेवरी, अनप्लेजेंट, लेकिन वो डिपिक्ट करता है, उसे शो करता है, डजंट रियली मेक सेंस, दिस वन विल नॉट फिट इन द सेकेंड ब्लैंक। इनअप्रोप्रिएट, जो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसकी इनअप्रोप्रिएट इंटेंशन होती है और वो डिरेल कर देता है हैंडसम हीरो को, उसको पटरी से ही उतार देता है, ऐसा। या उसकी अच्छी इंटेंशन होती है लेकिन फिर भी वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव रिलेशनशिप गड़बड़ है। हमने तो एस्टैब्लिश किया था कि प्लस तो दोनों प्लस, माइनस तो दोनों माइनस, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सो आई गेस ये रिलेशनशिप गलत है, विल बी रूल्ड आउट, विल बी रूल्ड आउट, विल बी रूल्ड आउट। नाउ यू मे हैव अ डाउट दैट वेदर B or D, which one is a better answer choice? So I guess you'll agree with me when I say that option B is a better answer choice because उसकी खराब इंटेंशन होती है और वो रास्ता उसका रुकावट बनाता है, उसके नोबल मिशन पे जाने से उसे रोकता है. Okay, so I guess let's stick to option B. The next one. After a natural spring was discovered in the arid region, in the dry region, the family's old abandoned farm was quickly dashed into a profitable private business centered around the state of the art well that dash valuable water. भाई valuable water positive है. सो एक नेचुरल स्प्रिंग था जो एक एरिड रीजन में डिस्कवर हुआ था और फैमिली का जो ओल्ड अबैंडन्ड फार्म था वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल गया एंड उससे वैल्यूएबल पानी मिलने लग गया। तो कुछ पॉजिटिव 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 सा हो रहा है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी, वेरी सून श्रेयांश। सो turned looks like, see, we need a verb here. Farm was quickly, she turned into a profitable private business. I guess not a bad choice. Configured, well, you don't configure a farm into a private business. Transformed, yes, good answer choice. Expropriate hota hai when you move someone out of their property. Transpired means, let's see. See, अगर हम सेकेंड वर्ब को देखें यहाँ पर, एक्सेल्ड वैल्यूएबल वाटर, क्या पानी को हम एक्सेल कर सकते हैं? सो अगर हम पानी को एक्सेल नहीं कर सकते, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट द एंटायर ऑप्शन हियर। कैन यू इरेडिकेट वैल्यूएबल वाटर? इरेडिकेट होता है किसी को बिल्कुल जड़ से निकाल देना बाहर। सो आई गेस दिस वन विल ऑल्सो बी रूल्ड आउट बिकॉज इट्स अ मिसफिट देयर। नाउ emanate means to produce. Looks like a good choice. You don't manipulate valuable water. And when you expiate, you make amend. आपने कोई गलती करी, आपको लगा मैंने गलत कर दिया, आप उसको amend कर रहे हो, आप उसे ठीक कर रहे हो, आप उसे expiate कर रहे हो उस प्रॉब्लम को. So you don't expiate valuable water. So the only choice that we could not rule out was option C. Let's just put it there and see how it works. So, after a natural spring was discovered in the arid region, the family's old abandoned farm was transformed into, changed into a profitable private business centered around the state of the art modern well that emanate produced valuable water. Looks like a good fit. Companies that try to improve their employees' performance by dash reward encourage negative kind of behavior instead of a dash genuine interest in doing the work well. अब देखो, जो कंपनीज ट्राई करती हैं टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, वो अगर रिवॉर्ड देंगे तो क्या नेगेटिव बिहेवियर एनकरेज कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट. सो व्हाट डू यू थिंक यू नीड हियर? Instead of a dash genuine interest in doing the work well. Now, this one looks like a tricky question. Let's see. So, withhold, किसी चीज को रोक के रखना. So, you're withholding the reward. आपने रिवॉर्ड को रोक लिया और आपने रिवॉर्ड को नहीं दिया. तो भाई मुझे लग रहा था मुझे तो रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, तो क्या होगा? मेरा नेगेटिव एनकरेज मतलब बिहेवियर होगा कि पॉजिटिव होगा? प्रॉब्ली नेगेटिव होगा. लुक्स लाइक अ गुड आंसर चॉइस हियर. कॉन्फर और बेस्टो का मतलब होता है किसी को कोई चीज देना बट नॉट फिजिकली. सो गॉड हैज बेस्टोड और कॉन्फर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स ऑन यू. बहुत सारी चीजें भगवान ने आपको दी हैं. सो दे लिटरली फिजिकली दी है लेकिन हाथ से नहीं दी, जस्ट गिवन देम टू यू. सो कॉन्फर एंड बेस्टो अगर हम करेंगे तो नेगेटिव रिवॉर्ड बिहेवियर कैसे जनरेट कर सकते हैं? सो दे लुक लाइक good, they don't look like good options.
गिविंग अगेन मीन्स दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा हमें? सो probably these three do not look like good answer choices, but let's see. Discredit, discourage, seeking. भाई हमें genuine interest चाहिए उनसे, तो probably हमें यहाँ पर negative और यहाँ पर positive word चाहिए था, क्योंकि instead of dash a genuine interest in doing the work well, हमें यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड चाहिए था जो उसको सपोर्ट करता, कि भाई नेगेटिव रिवॉर्ड नहीं हो लेकिन जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप हो। रिवॉर्ड क्यों दिया जाता है किसी को? ताकि लोग खुश हों, उनका काम में और मन लगे और वो और मजे से और मन से काम करें, तो उसके लिए दिया जाता है। नाउ फॉस्टर मीन्स टू सपोर्ट, एनकरेज। So, if they want to support or encourage good behavior or genuine interest in working well, so probably option A should be the right answer. Discredit, कोई भी discourage या discredit क्यों करना चाहेगा genuine interest in doing the work well, or maybe seeking genuine interest in doing the work well. So it doesn't really fit there, these two. So I guess we have established that the right answer here will be option A. So अगर आप रिवॉर्ड को रोकते हो तो उससे क्या होगा? एक तो नेगेटिव बिहेवियर जनरेट होगा, और जो जेन्युइन इंटरेस्ट है काम करने में वो फॉस्टर नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ फॉस्टरिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन डूइंग द वर्क वेल. So, I guess that's all I had to teach you today. Any questions that you might have, I would love to take up your questions now and answer them. Well, Akshat, expect it to see. Last year for IPMAT Indore, the cutoff was 112, and the year prior to that, it was just 72. So there was a hike of 40 this year. So I expect it to go up. I don't expect it to come down. So maybe plus 5, minus 5. Not minus 5, maybe just plus 5. So expect it around 120. That's just a speculation. 112, Shreyansh. Well, you expect it to stick to 112. See, prior to, say, since 19, since 2020, 21. So if I talk about just the past 3, 4 years, it was around 68, 70, 72. But then there was a spike of 40. So it went from 72 to 112. So thinking that it would stick to 112 or it'll stay around 112, okay, possible, but I expect to rise a little more. 120 is a pretty safe score. Akshat, I hope you understand there is this concept of the cutoff and there is this concept of a good score. So cutoff will just get you the call, but the good score will help you through the interview as well. So I'd say the good score should be slightly more, not just 130. Aim, see, if you expect 45 questions in the IPMAT Indore paper this year, so we are looking at a score of the overall of 180, and you should aim for at least 140 plus score to stay in the safe zone. Yes, and that's the reason why the cutoff increased, because there was more opportunity for you to score better. So earlier they gave you 30 questions, that is during COVID, and this year there were 15 questions more. So the opportunity to score increase. That's the reason why the cutoff went higher. It depends on a lot. No, no, they don't tweak it according to their wish. There are a lot of things that are in play when they decide the cutoff, the number of participants, the number of applicants, the level of difficulty, and and the number of questions. So there are a lot of things based on which the cutoff is decided. Well, as of now, in IPMAT Indore mocks, I'd say you should target around 140 to 150, somewhere between 40 and 50, 140 and 50. That's it. Now, no, see, it will be wrong to say that only Arun Sharma is enough. See, Arun Sharma will give you questions, the next level questions. As I said at the beginning of the session, that first, understand the basics.
understand the concepts, understand the nuances of the language. Like we will be doing some grammar-based questions and some parajumbles in the next session. So, see, to deal with questions based on Arun Sharma, you need to have clarity on certain basics. So, you understand parts of speech, you understand the basic rules of grammar, you understand the concepts of vocabulary. Even if you're looking at the fill-ups, you should understand what sort of word can go in a certain blank, how you rule out the wrong answer choices, have a good understanding of root method and the word cluster method. And I guess then you should, after you've practiced enough, after you've written, I mean, if actually practice enough, then you should pick up Arun Sharma and then try to evaluate yourself through these questions, and you'll probably understand uh, how strong your concepts are. And I guess that should do the trick. So I guess, students, on this note, I'll take your leave. I will see you soon, and we'll practice some very good questions based on parajumbles and grammar in the next session, the live session that we have. So if you like the session, do mention it in the comment section below. Don't forget to like and subscribe. Stay tuned, stay connected. Yes, sir. That's what I meant. All right, on this note, take your leave. Take care. Stay tuned. Bye bye.